गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने दैट इज डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू जो होता है। जब कभी भी हम शेयर इशू करते हैं तो उसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं कि उसको या तो डिस्काउंट में इशू करते हैं और साइड बाय साइड हम लोग उसको प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। तो ये जो होता है ये बिजनेस के लिए या फर्म के लिए लॉस होता है। क्लियर? तो how do we write off these discounts and losses? This will be our topic of discussion today. Okay, so discount on issue of debentures or loss on issue of debentures is a capital loss. Okay, ये recurring नहीं होता, ये बार बार नहीं होता। This is only happening at the time of issue of debentures. So this is a capital loss which is to be written off at the earliest, but before the redemption of debentures. Okay. So whenever you issue debentures at a discount, so that is genuinely a loss. Suppose you had issued debentures worth rupees 10 lakh at a discount of 5%. That means what? You are taking 5% less. Okay. That means you are taking 9,50,000 from the investors. तो 50,000 is a loss. तो इसे हमें राइट ऑफ करना होता है और जिसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं है। You can write off the loss as per your suitability, but that must be done well before the redemption of debentures. Okay. Similarly, it can be written in the year when the debentures are issued. So the general practice is what? The year when you issue the debentures, discounts and losses needs to be written off that year, or you can spread over the losses, okay, over the life of debentures. ठीक है? तो इन दोनों मेथड से अपने डिस्काउंट्स या लॉसेस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कर सकते हैं। Okay, so in today's video we will be doing how do we write off the discounts in the year of issue of debentures. इसके बाद वाले वीडियो में मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट मीन्स राइटिंग ऑफ डिस्काउंट्स ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, वी विल बी डीलिंग विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स in the year they are issued. Okay, तो जब कभी भी डिस्काउंट या लॉस होता है तो हमें उसे किसी फंड से राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, तो देखिए when discount, loss and issue of debentures is written off in the year when debentures are issued, it is written off from okay, तो डिस्काउंट या लॉस का जो भी पैसा है इसको हम किस में से राइट ऑफ करेंगे? First preference we give to the security premium reserve, SPR. If the amount in the SPR is not sufficient, then we can utilize the balance in the profit and loss account. And if nothing is mentioned relating to the funds, so we will be utilizing statement of profit and loss. Okay. And still when these two amounts are not sufficient to write off the discount, in that case we can utilize the capital reserve, but that should be specifically mentioned in the sums. आई बात समझ में? तो इन तीन फंड्स में से अपने डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करते हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द अकाउंटिंग एंट्रीज दैट वी मेक व्हेन वी राइट ऑफ द डिस्काउंट्स। ओके, सो अकाउंटिंग एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. Now what is that? So the accounting entry is security premium reserve account debit, okay, profit and loss account debit, capital reserve account debit, okay, to discount slash loss on issue of debentures. Okay, what's the narration? Being discount या loss on issue of debentures written off. Okay, so mind that if only the SPR is sufficient to meet off the discount, तो फिर इन दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? सो दिस वाज द अकाउंटिंग एंट्री विच वी पास फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू. ओके,
So let's see one sums how we solve that. Sums number 38 देखेंगे. Kitply Limited issued 2 lakh rupees 2 lakh 10% debentures at a discount of 5%. That means the total loss is what? 5% of rupees 2 lakhs. Okay, that stands to 10,000 rupees. The term of issue provide repayment at the end of 4 years. Kitply Limited has a balance of 5 lakh in the security premium reserve. तो कंपनी के पास सफिशिएंट बैलेंस है एसपीआर में, तो अपने ये जो डिस्काउंट जो हो रहा है हमारा 5% ऑफ 2 लाख, इसको राइट ऑफ करेंगे एसपीआर अकाउंट से. ओके, नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर आस्क्ड टू पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स and writing of the discount. Okay, so we have to pass the entry for issue of debentures as well as writing of the discounts. Okay, so let's see how we do it. First we pass the issue entries for issue. तो as because कोई हमको डेट नहीं दे रखा तो हम फर्स्ट ईयर के हिसाब से करते हैं. ओके, so this is the beginning of the first year. So you are receiving amount, so for that you have to write the entry बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. 2 लाख का डिबेंचर इशू किया था 5% डिस्काउंट पे, तो 5% ऑफ 2 लाख इज 10,000. 10,000 रुपये कम आप रिसीव कर रहे हो. ओके, सो व्हाट अमाउंट यू आर एक्चुअली रिसीविंग, यू आर रिसीविंग 1,90,000. बैंक अकाउंट डेबिट 1,90,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,90,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. क्लियर? Next is we have to transfer this amount to the debenture account. Okay, so debenture application allotment account debit 1,90,000. Now this is the loss, discount on issue of debentures, और इसको ही हमें write off करना है. Okay, 10,000 to 10% debentures 2 lakh rupees. Narration will be being amount transferred to debenture account. तो ये 2 एंट्रीज जो है हमने इशू के पास कर दिए हैं. अब ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ का एंट्री पास करना होगा. इसका राइट ऑफ का एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, यही हमारा डिस्काउंट हमने इशू किया था, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 10,000. ओके, नाउ व्हाट इज द नरेशन, बीइंग डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ. ठीक है, बस सिंपल से यही करना है. लेट्स सी वन मोर सम्स. सी सम्स नंबर 39. ऑन 1st April 2023 KK लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स of 100 each at a discount of 10%. Clear? Redeemable at a premium of 5%. So what is my total loss then? My total loss is discount 10% plus you are redeeming it at a premium of 5%. यानी टोटल जो है 15% हमारा नुकसान हो रहा है. किसका 15%? 10,000 डिबेंचर इंटू 100 यानी 10 लाख रुपए का. 10 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख रुपए. 1 लाख हम कम ले रहे हैं डिस्काउंट के हिसाब से, और जब लौटा रहे हैं पैसा, रिडीम कर रहे हैं, तो 10 लाख तो हमको देना ही है, प्लस 50,000 एक्स्ट्रा देना है 5%. सो माई टोटल लॉस स्टैंड्स एट व्हाट? 1 lakh for the discount and 50,000 for the premium. Okay, so our total loss is 1,50,000. Now see, it is a balance of 1 lakh in the capital reserve. कैपिटल रिजर्व में क्या है? 1 लाख रुपया है, and 50,000 in securities premium reserve, plus you have a balance of 50,000 in the SPR account. Now the company decides to write off discount or loss on issue of debentures in the year of ended 31st March from the capital reserve and security premium reserve in the year of issue. Okay, so you have to pass a entry for issue of debentures and writing of the loss from that account. Okay, and you have to also show the loss on issue of debentures account. Okay, so let's see how we do it. तो पहले अपने इशू ऑफ डिबेंचर्स का एंट्री पास करेंगे.
तो हमें क्या पैसा मिल रहा है देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हमने इशू किया था 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, दैट मीन्स यू आर सपोज टू रिसीव 10,000 इंटू 100 और 10 लाख। लेकिन आपने डिबेंचर इशू किया है 10% डिस्काउंट में, यानी आप 90 रुपये ही ले रहे हो, 90 रुपीज़ ले रहे हो। सो व्हाट अमाउंट यू आर गेटिंग, 9 लाख रुपीज़, माने 1 लाख रुपया कम मिल रहा है आपको। ओके, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 lakh rupees. Okay, narration will be being amount received on 10,000 debentures at the rate of rupees 90 because this is the discounted amount. Okay, now the next entry will be transferring the amount received to the debentures account. Now what entry do we pass for this? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9 लाख जो हमको मिला है। Now what is your loss on issue? Okay, so we had issued the debentures at a discount of 1 lakh rupees. तो ये मेरा नुकसान हो गया। प्लस when we are redeeming the debentures, when we are supposed to redeem the debenture, that will be at a premium of 5%, यानी 5% ज़्यादा हम लोग पे करेंगे। तो 10 लाख का 5% कितना हो गया, 50,000। Okay, so this is you are getting a loss at the time of issue, and this is the loss you are supposed to bear at the time of redemption. That means your total loss is how much, 1,50,000. Okay, to 10% debentures 10 lakh rupees, that is the face value of debenture जितना का आपने issue किया है, plus this is the premium on redemption, that is 50,000. Okay, being amount transferred to debenture account. So these two entries pertain to the issue of debentures. issue of debentures के लिए हमने एंट्री पास करी है। अब हम लोग राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ के लिए हमने क्या बोला था, जो भी बैलेंस आपको दिया रहेगा हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। तो सी वी हैव 50,000 इन द SPR अकाउंट, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। Balance we have 1 lakh in the capital reserve account. Capital reserve account debit 1 lakh rupees. So our total loss was 1,50,000. So we have written off this 1,50,000 against this capital reserve and SPR account. Being loss on debentures written off. Okay. So this was the journal entry of issue of debentures and writing of the losses. नाउ दे हैव आस्क्ड फॉर, हमें प्रिपेयर करना है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कैसे बनाएंगे। ओके, सो सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सी द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। सो व्हाट लॉस यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग लॉसेस फ्रॉम एट टू एंड्स। पहला क्या है, टू डिबेंचर्स। ओके, सो दिस वैल्यू इज द डिस्काउंट अमाउंट। ओके, तो 1 लाख का जो नुकसान हो रहा है एट द टाइम ऑफ इशू, प्लस टू प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन कितना है, 50,000। दिस इज द लॉस विच यू आर इनकरिंग एट विच यू विल बी इनकरिंग रादर एट द टाइम ऑफ रिडीम्पशन। तो ये हो गया टोटल लॉस मेरा 1,50,000। तो इसका फंड्स हम कहाँ से दिला रहे हैं, तो SPR से दिला रहे हैं 50,000 और कैपिटल रिजर्व से 1 लाख। ओके, and there is no balance against that. So children, this is how we prepare the loss on issue of debentures account. Okay, let's see one more sums. Let's see sums number 40. Woodlock Limited issued 20,000 8% debentures of 100 each. 20,000 into 100, that means the nominal value of the debentures is 20 lakh rupees. On 1st April 2021, redeemable at 20% premium, यानी जब हम उसके पैसे को लौटाएंगे, whenever we are to redeem the debentures, हम लोग 20% ज़्यादा पे करेंगे। तो what is 20% of 20 lakh? So that stands to 4 lakh rupees, यानी 20 का हम 24 लाख लौटाएंगे, यानी 4 लाख मेरा नुकसान हो जाएगा। The debentures is fully subscribed. It is a balance of 1,50,000 in the SPR account. ठीक है,
नाउ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी है कि मेरे लॉस जो है वो 20% ऑफ 20 लाख है, दैट इज 4 लाख रुपीज, बट द बैलेंस गिवन ईयर इज ओनली 1,50,000 इन द एसपीआर अकाउंट. तो आई टोल्ड यू दैट when nothing has been mentioned, the difference of losses is to be provided from the profit and loss account. Okay, now what we are asked to do is pass the necessary journal entry for issue of debentures and writing of the loss on issue of debentures. ठीक है, तो same treatment we have to do. So let's see how we do the sums. So the issue entry remains same. So what will be the entry for issue? 1/4/23 बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख. ठीक है, अभी चूंकि डिस्काउंट में इशू नहीं है इसलिए हम लोग पूरा नॉमिनल वैल्यू दिखाएंगे. सो बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 लाख. ओके, तो इशू के वक्त कोई भी मेरे को लॉस नहीं हो रहा है. तो लॉस कब हो रहा है? लॉस हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट? ट्रांसफरिंग 1/4/23 debenture application allotment account debit 20 lakh, but you are redeeming it at a premium of 20%. तो 20 लाख का 20% कितना हो गया? 4 लाख रुपया. लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज टू 8% डिबेंचर्स 20 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडिम्पशन 4 लाख. ओके, नरेशन विल बी being amount transferred to debentures account. ओके, तो ये हम लोग का खत्म होता है इशू का एंट्री. अब हम लोग पास करेंगे एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द लॉस. तो लॉस राइट ऑफ करने का एंट्री क्या होगा? ये एंड ऑफ द ईयर में दिखाएंगे 31/3/24. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हमको 1.5 लाख ही दिया हुआ था. स्टिल वी नीड 2,50,000. ओके, मगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया हुआ है कि 2,50,000 हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे. तो मैंने क्या कहा था? इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिटेलिंग, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,50,000, डिफरेंस वहाँ से ले लिया हमने, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 4 लाख रुपीज़. ओके, narration being loss on issue of debentures written off. Okay, so this is how you pass the accounting entries for issue and writing of the losses. Woodcraft Limited issues 20,000 8% debentures of 100 each. तो देखिए यहाँ भी जो है वो 20 लाख का इशू हो रहा है. रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. यहाँ भी हम लोग कितना है? 20% का हम लोग ये कर रहे हैं, प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द अर्लियर सम्स. डिफरेंस क्या है? वहाँ पे हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1.5 लाख रुपया दिया हुआ था, यहाँ पे वो भी दिया हुआ नहीं है. दैट मीन्स एज आई टोल्ड यू, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट फ्रॉम वेयर विल यू प्रोवाइड फॉर द लॉसेस और डिस्काउंट्स, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को यूटिलाइज करना है. ठीक है, तो यहाँ भी जो लॉस हो रहा है हमें रिडीम्शन पे, तो उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए पीएल अकाउंट के बैलेंस को यूटिलाइज करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सी हाउ डू वी पास द अकाउंटिंग एंट्रीज. चलिए, तो पहले अपने इश्यू का एंट्री पास करेंगे. तो 1/4/23 को क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो वी हैड इश्यूड 20,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच. तो पूरा का पूरा हमको नॉमिनल वैल्यू 20 लाख रुपया में मिल रहा है. क्यों? क्योंकि इशू करते समय हमने कोई भी डिस्काउंट इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंट्री विल बी टू ट्रांसफर द अमाउंट रिसीव टू द डिबेंचर्स अकाउंट. तो 1/4/23 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज. ओके, दिस इज द अमाउंट यू हैव रिसीव्ड अबव. अब लॉस कितना हो रहा है? सो दैट इज 20% ऑफ 20 लाख रुपीज, है ना, बिकॉज यू आर रिडीमिंग 20% एक्स्ट्रा. तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 4 लाख रुपीज.
to 8% debentures 20 lakh rupees, because this is the amount you transfer to the debenture account 20 lakh, और टू प्रीमियम वन रिडम्पशन कितना है 4 लाख रुपया. ओके, so amount narration will be being amount transferred to 8% debentures account. So this was the entry relating to the issue of debentures. Now, as because the sum is silent on the source of funds, कि ये जो लॉस ऑन इशू है इसको आप कहाँ से राइट ऑफ करोगे, इसके लिए फंड्स कहाँ से लाओगे. तो एज स्टेटेड अर्लियर we will be utilizing the profit and loss account. So the entry which we pass for writing of the losses, okay, is what? 31,324 profit and loss account debit 4 lakh to loss on issue of debentures 4 lakh rupees. Narration will be being loss on issue on debentures written off. Okay, so student, this was an overview of how to write off loss and discount on issue of debentures. Okay, so as stated earlier, the next video will be on writing of the debentures, discount on debentures and loss on debentures on the full life of debentures, when that means till the time you are holding the debentures. Okay, till then keep learning, and if you have any problem or comment, you can write in the comment box, and please do like, subscribe and share this channel as much as you can. Thank you.